Hello everyone, my name is Raj and thank you for tuning in. In today's video, I want to explain how I built a septic tank. I'm standing right on top of it, and above that we have a toilet and a bathroom set. This is just regular civil work, so nothing fun in that, but I will explain you how I built a septic tank because it's a bioseptic tank and I want to give you more information and on how to do it. Also, this septic tank, we do not have to clean it for the next 25-30 years, so there's no need to bring in a vehicle to suck out the gutter from inside it, and that's only because the way it is built. So I want to explain you everything in this video, so let's get started. So हमने अभी सम्प बनाने का और राधा सेप्टिक टैंक बनाने का काम चालू किया है, और उसके लिए संडे एक जेसीबी को लेके आया और यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा खड्डा खोद के लिया है. दिस इज़ मोर देन रिक्वायरमेंट. यूजुअली सेप्टिक टैंक इतना बड़ा नहीं रहता है. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ़ पीपल. हम यहाँ पे खाली 6 लोग या 8 लोग मैक्स रहेंगे. दैट टू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ़ गेस्ट्स वी इनवाइट. बट उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा है. द रीज़न बीइंग आई वांट टू मेक इट एज़ अ बायोसेप्टिक टैंक, जहाँ पे हम इसको खोलेंगे ही नहीं और एटलीस्ट 25-30 साल तक इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स है वो डिकम्पोज होके सेडिमेंट होता जाएगा, और इसका जो रेसिड्यू पानी है वो हम पेड़ पे यूज़ कर सकते हैं. वैसा सिस्टम करना है, एंड दैट इज़ वाई वी हैव गॉन विद दिस मेथड. अभी गड्ढे बनाते समय वन थिंग टू बी नोटेड इज़ दैट आपका पहले डायमेंशन आपको पता चला होगा, आर्किटेक्ट ने आपको डायमेंशन दिया होगा, उसके बेसिस पे आप चालू कर रहे हैं. बट इफ़ यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ, even if you're making a hole for some water storage or anything, one important thing that you have to remember is that you have to start bigger. समझे कि मेरे को अभी 8 by 8 का एक सेप्टिक टैंक चाहिए, तो मेरे को एक्चुअली गड्ढा चालू करना है 10 by 10 में. वाई? बिकॉज नो मैटर हाउ मच ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल्स दैट यू यूज़, आप जब खड्डा खोलते हैं वो वी शेप में ही होने वाला है. यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ. जब चालू किया वो बहुत बड़ा था, पर जैसे 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 गया वो एक वी शेप में हो जाता है, और फाइनली हम अटेंड कर सकते हैं. सो रफली दे से दैट यू हैव टू कीप 2 फुट का वेरिएशन, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ डीप यू आर गोइंग. अगर मैंने अभी 6 फीट डीप गया हूँ, अगर आप 10 फीट जा रहे हैं या 12 फीट जा रहे हैं तो और आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा. सो 8 बाई 8 के लिए मैंने 10 बाई 10 पकड़ा, बिकॉज दी हाइट इज़ जस्ट 6 फीट. पर अगर आप 10 फीट या 12 फीट जा रहे हैं तो आपको, अगर 8 बाई 8 का खड्डा चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट 12 बाई 12 से चालू करना चाहिए, तभी जाके वो वी शेप 8 बाई 8 में फिनिश होगा. ये मेरे को पता नहीं था, बट आई थिंक आई शुड टेल यू दिस. अभी नेक्स्ट वर्क टू स्टार्ट इज़ टू मेक द बेस. उसके लिए हमको कंक्रीट बनाना है. फॉर दैट हम 1.25 इंच का मटेरियल या कि गिट्टी यूज़ करेंगे, और उसके साथ सीमेंट एंड क्रश्ड सैंड यूज़ करके पहला बेस बनाएंगे, और उसमें स्क्वायर करके दोरी लाइन बांध करके वी विल मेक अ स्क्वायर शेप, बिकॉज आई नीड अ 8 by 8 का सम्प. इट विल बी अ स्क्वायर शेप, एंड वहाँ से फिर ईंट में बांध काम करके ऊपर लेके आएंगे. दिस इज़ द होल दैट्स बीन डग and we started building the sump. Let me tell you the features of this septic tank. Any tank that we do has to be done with the 9 inches thick wall. So instead of stacking the bricks like this, we have stacked it like this, so that the thickness of the brick itself is 9 inches, so we'll get the 9 inches thick wall. Also we are creating partitions in it. So the first partition is that one which holds all the sludge and whatever we use in the bathroom, everything that it goes and falls over there. On the side behind the person who's working, वहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 2 ब्लू कलर का पाइप है. तो उससे जो भरने के बाद जो ओवरफ्लो होता है वो सेकंड चैम्बर में आता है, और अभी ये चैम्बर जब बन रहा है उसमें भी हम पाइप डालेंगे. तो वहाँ पे जब ओवरफ्लो हो जाता है वो इस साइड आएगा. द रीज़न फॉर दैट इज़ वी वांट टू इंट्रोड्यूस bacterias into it, good bacterias, which will actually process the waste वहाँ पे, और उससे जो पानी खाली निकलता है वो इस साइड आता रहेगा. और जब तक ये 3rd चैम्बर पहुँचेगा वो ऑलमोस्ट साफ़ हो जाएगा. तो वहाँ पे ओवरफ्लो ट्यूब रख के हम बाहर
जो पानी आता है उसको गाड़ी साफ़ करने के लिए या पेड़ों में डाल सकते हैं. ऑफ कोर्स बिकम्स अ मैन्योर, तो न्यूट्रिशनल हो जाता है और उसको हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं. जो बीच में डिविशंस है उसके लिए हमने खाली 5 इंच का विड्थ रखा है. दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि वो खाली पानी को इस साइड से उस साइड पार्टीशन ही आने देगा. जो सीमेंट मिक्स किया है इसमें हमने वाटर सीलेंट नहीं मिक्स किया है, बट जब नीचे पीसीसी किया उसमें हमने वाटर सीलेंट यूज़ किया था. वो डॉक्टर फिक्सिट का 101 वी हैड यूज्ड, बट फॉर द पार्टीशन वी हैवंट यूज्ड. पर जब प्लास्टरिंग करते हैं वो प्लास्टरिंग वाले माल में हम यूज़ करेंगे, एंड दैट वे वी विल अवॉइड द लीकेज. हियर इज़ द सेप्टिक टैंक जो कंप्लीट हुआ है. अंदर दिखाता हूँ. अंदर से तीनों चेम्बर्स वाटर प्रूफिंग हो गया है और अच्छे से स्मूथ सरफेस आया है. और जस्ट अ फॉल. और बाहर से भी थोड़ा प्लास्टरिंग करके मजबूत किया है ना. इसके ऊपर आज स्लैब पोर करने वाला है, और स्लैब पोर करने के लिए हमने ऑलरेडी जाली रेडी कर दिया है. So here is the jali. Next, to pour the concrete, we have to secure the sides. To do that, we need wood. Instead of going and buying fresh wood, I went to the store and bought reclaimed wood that is going to be cheaper and also good for the environment. So I used that to secure the sides. To do that, you can see Shiva and the Mistri nailing the wooden planks directly on the bricks, and that's quite good. That's how the entire border is made. The walls are actually made with sand big stones, so when you drive the nail inside it holds it very firmly, and that's quite enough. As you can already imagine, there are 3 holes inside the septic tank, and we want to pour concrete on top of it, which means that we need a layer which holds the entire weight of the concrete. To do that, we first put bamboo sticks across the span, and then we put a plywood on top of it. But the bamboos cannot stand outside the brick wall, and that's why we had to demolish a little bit so that they go and fit snug flush to the wall top. And after that we put plywood on top of it, so that if we pour any amount of concrete, like we poured 4 inches, but if we could pour 6 or 8 inches, still it would definitely take the weight. And of course these wood materials are decomposable, so if at all there are methane gases which are generating at the bottom, they are going to just decompose and fall right in back to it, and the bacteria will just eat them. We used 8 mm rod to make the metal jali which is going on the top, and because it's a slab we just used single jali, that's quite enough. Before pouring the concrete, we placed the chamber doors on the top so that we knew at what level we have to fill the concrete. So here the Mistri is actually putting concrete on the perimeter of the chamber and then setting it looking at the level on which the concrete has to be poured. After that we just pour the concrete and set it for overnight. The next day we were able to remove the sides. What you're seeing is the other septic tank which we made, and this is exactly not how you're supposed to do it. So the contractor here actually nailed on the perimeters, and then he put binding wire across it, and he put cement bags or cardboard on top of it, and then poured concrete onto it, and the binding wire did not take the weight of it.
everything fell down, and that's what you see. So here I wanted to show you the right way to do it and the wrong way we did it. We did both and we learned from our mistakes. As you can see, it is a bit more effort to build a septic tank like this, because usually people build it just 4 walls and start filling it with it, but a small effort goes a long way. And if you do it in this way, then for the next 25 years I don't have to bring in a vehicle. Apart from that, the water that comes out, I have kept a garden right next to the septic tank, so anything that overflows from it, which is just normal pure water which we can use for agriculture or just washing the vehicle, so this garden is going to serve that purpose. This tiny project that I'm working on, if you haven't seen the rest of the videos, please go ahead and check in the description. I have an entire playlist right from how to build the home to how I cleared the land. Everything detail is over there. So I want to document all these things and help you build a sustainable living. If you like such videos, then please do subscribe to my channel, and I hope to see you in the next video, and thank you for sticking for so long.